बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदर फॉर डियर टीचर्स। आज का जो हमारा सबक है वो एक नई आवाज के बारे में है और इस सबक में जो तस्वीर दी गई हैं उनसे हम जो है आज एक नई आवाज का तारुफ कराएंगे बच्चों को। हो सकता है बच्चे इन तस्वीर के नाम जानते हो तो इनसे हम लेंगे इनका रिस्पॉन्स। आप जानती हैं कि हर लेसन से पहले जो हम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करते हैं और किसी भी साउंड को जिस दिन हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उनसे एनवायरनमेंट में मौजूद कुछ अशिया के नामों के बारे में पूछते हैं और खास तौर में उनका नाम पूछते हैं जो कि स्पेशली इस साउंड से रिलेटेड होती हैं और उन्हीं का ही जिक्र आने वाली पिक्चर स्टोरी में भी होता है। बच्चों के पास जो साउंड का नॉलेज ऑलरेडी है उसको हम यूटिलाइज करते हुए बेस करते हैं उनकी अगली लर्निंग पे। तो आइए बच्चों भी स्क्रीन पर देख के बताइए कि आपको क्या चीज नजर आ रही है। ये है एक रंग बिरंगी सी रेनबो। इट्स अ रेनबो एंड व्हाई इज इट कॉल्ड रेनबो? बिकॉज बारिश के बाद जब आसमान में पानी रह जाता है और रोशनी सूरज की उसमें से गुजरती है तो आसमान में इस तरह की एक खूबसूरत सी रेनबो नजर आ जाती है और हमें इस रेनबो को देखते ही क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह, क्योंकि ये करने वाली जात सिर्फ उसकी है, इंसान ये कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अगली तस्वीर किस चीज की है। ओह, इट्स एन एनिमल। इट इज हॉपिंग। इट इज हॉपिंग। डू यू नो हाउ टू हॉप? डिड यू एवर हॉप इन द प्लेग्राउंड? टीचर आज आपने इनसे हॉप जरूर करवाना है, ठीक है? इट्स अ फन एक्टिविटी। बट व्हाट एनिमल इज इट? कौन सा जानवर है ये? इट्स अ रैबिट। शाबाश, इट्स अ रैबिट। Now what's happening here? It's a flower taking a bath in the rain. Can you see the water droplets? Yes, rain. So why am I talking about all this? Let's go about the first sound. Rainbow, rabbit, rain. So that means today's sound is R. Can you all do it? R. Yes, teachers. आपने बच्चों से इसी तरह साउंड को प्रोड्यूस करवाना है and this sound is quite funny because there's a lot of wiggling happening in the tongue. R. Good. So teachers, ये प्ले ग्रुप है। मे बी सम बच्चे अभी अपनी प्रोनाउंसिएशन को लेके या साउंड के जो आपके वोकल कोड्स हैं उनकी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो। सो डू नॉट फोर्स देम बट लेट देम एटलीस्ट ट्राई। आपके लिए टीचर्स जो टीचर नोट है इसको फॉलो करते हुए आई एम गोना रीड आउट द स्टोरी वन टाइम विद प्रॉपर इंटोनेशन। लेकिन आपने जब ये स्टोरी बच्चों को सुनानी है तो अपने सामने जो आपने चीजें अरेंज करके रखी हुई हैं उनको यूज करना है, उनको शो करना है। कैन बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स और फिर आपने इंटोनेशन का भरपूर इस्तेमाल करना है, यानी कहाँ पे आवाज ऊंची करनी है, कहाँ नीची करनी है, कहाँ आवाज में गुस्सा शो करना है, कहाँ एक्साइटमेंट शो करनी है, कहाँ पे हैप्पी लहजा होना चाहिए और कहाँ पे सैड या कहाँ पे परेशान सा एक्सेंट होना चाहिए। ये सारी इसको इंटोनेशन कहते हैं। इसीलिए स्टोरी एंगेजिंग जो है एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि ईसीसी के टीचर को आना चाहिए क्योंकि स्टोरी और एक्शन से ही बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी एंड टीचर्स प्लीज फोकस and focus along with the students. Rida wanted to make a bouquet of red roses for her mother. Her house had a big garden full of roses. The smell of roses would make Rida so happy that she could take deep breaths to feel the sweet smell of the red roses. It was Sunday early morning and she woke up to give a surprise to her mother. After washing the face, she went straight to the flower plants. Rose plants were full of sharp thorns, so Rida was plucking the roses carefully. Suddenly, she heard a noise. Munch, munch, munch. And oh my dear, what does she see? It was a fluffy white rabbit hiding under a rose plant and eating its carrot. Rida could clearly see its little red nose from behind the plants. The rabbit quickly hopped and Rida wanted to follow it. After a little chase, Rida was able to see the rabbit's hole. There was loud thunder and heavy rain started. Rida and the rabbit both ran to take shelter under the tree. They waited for some time and the rain stopped. There was sunshine and a lovely rainbow appeared in the sky. The rabbit ran away and Rida picked her rose and came back home to her family.
Now, teachers, we are going to read out the story loud multiple times to the students. Or students, in this picture story, there were some objects had the same starting sound. So, can you name them with me? This is a rabbit, rainbow, rain, and rose. So, what is the starting sound? R. Yes, good. After multiple practice, you will be able to do it like me. तो आपने बार बार इसकी sound की practice करनी है. Again, we say rainbow, rabbit, rose, and rain. The color of this slide is also red. Can you look here? Yes, this is the red color. It also has the same starting sound. Even the rose here is red. Good. Dear teachers, इसी तरह ही आपने बच्चों को अब involve करना है so that now they have the sound up here in the head active. अब आप इनको भेजेंगी लाइब्रेरी कॉर्नर में जहां से ये कुछ फ्लैश कार्ड्स लेके आएंगे और फिर उनको जब सर्च करेंगे तो वो तमाम पिक्चर्स जिनके स्टार्ट में र की साउंड आती है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो आपके साथ शेयर करेंगे. So here you have to pause this video and give the students a couple of minutes to sort out some r sound flashcards. Good dear students, अभी आपने टीचर के साथ जो एक्टिविटी की मुझे उम्मीद है कि तमाम टीचर्स जो हैं वो आपको फोकस करी थी, वो देख रही थी, उन्होंने आपसे रिस्पॉन्स भी किया और आपने भी टीचर को बहुत प्यारे प्यारे फ्लैश कार्ड्स ढूंढ के दिए होंगे. आई ट्रस्ट यू एंड टीचर्स आई ट्रस्ट यू ऑल्सो कि जैसे ही लेसन के दौरान में आई आस्क यू टू पॉज एंड मेक द एक्टिविटी हैपन तो आप उसी तरह ही एक्टिवली उठ के बच्चों से एक्टिविटी करवा रही होंगी क्योंकि इसी में ही बच्चों की लर्निंग है. अभी बच्चों अब आप प्लेग्राउंड में जाएंगे क्योंकि अभी क्लास में तो बहुत सारी आपने बातें की, स्टोरी भी सुनी, फ्लैश कार्ड्स भी ढूंढे. अब आप गए होंगे थोड़ा सा थक, तो टीचर आपको लेके जब जाएंगी प्लेग्राउंड में तो आप क्या करेंगे? आज की साउंड वाले वर्ड्स ढूंढेंगे. तो अभी देखते हैं कि प्लेग्राउंड में किसके स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत सारे रेड रोजेस लगे हुए हैं. तो शाबाश, वेल डन. और अगर आपके इलाके में बारिश हुई है तो आपने आसमान पे जरा गौर से देखना है कि कहीं रेनबो तो नहीं, और अगर बारिश हो रही है तो रेन में भी जाके आप खेल सकते हैं अगर गर्मी का मौसम है. सो टीचर्स प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली एंड एंजॉयिंग देयर लर्निंग. देयर इज अ वर्कशीट हियर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट्स अ रेड कलर बुके. जो फ्लावर है आपने इसमें कलर्स करने हैं रेड. बच्चों आपको मालूम है कि रेड कलर कौन सा है? हमने सीखा था ना, रेड इज अ प्राइमरी कलर, मैथ्स में हमने सीखा था. तो अब आपने रेड कलर लेके इस बुके में प्यारा सा कलर करना है. और इसके लीव्स में कौन सा कलर करेंगे? रेड करेंगे? नो, द लीव्स आर गोइंग टू बी ऑफ ग्रीन कलर. तो जनाब जब ये वर्कशीट हो जाएगी तो देखते हैं कौन प्यारी प्यारी वर्कशीट करके स्कूल लेके आता है और टीचर्स को स्टार्ट देती हैं. सो टीचर्स प्लीज कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज अंटिल द नेक्स्ट लेसन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.